नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन, केम छो, वणकम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाबार्स, खम्बगड़ी, राम राम, ए वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अनिल भारद्वाज आप सभी का पीआरएल के अमृत व्याख्यान में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आई अनिल भारद्वाज very warmly welcome you all to PRL का अमृत व्याख्यान। Today is a historic day for PRL and for ISRO. For PRL, as we are completing 100th episode of PRL Kamrit Vyakhyaan. As you all know, we started the PRL Kamrit Vyakhyaan on 4th of August 2021 with a sankalp that every Wednesday at 4 p.m. we will have PRL Kamrit Vyakhyaan. And these Vyakhyans were delivered by eminent scientists, engineers, technocrats, administrators, personalities from law, business, management, sports, culture, music, arts, whatnot. We completed this 75 uninterrupted episodes, weekly episodes of PRL Kamrit Vyakhyaan on 5th of January 2023. And thereafter, we took the sankalp of having the PRL Kamrit Vyakhyaan 2.0, which will be a monthly Vyakhyaan. Today, we are completing 100 episodes of PRL Kamrit Vyakhyaan and 25th episode of PRL Kamrit Vyakhyaan 2.0. So it's really a momentous occasion for all of us. I thank all the members of PRL Kamrit Vyakhyaan Committee who have been working for last 3 years continuously for having this uninterrupted PRL Kamrit Vyakhyaan. Today morning, ISRO made a century. From Sriharikota, that is Satish Dhawan Space Center in Shah, which is a launch port of India. We had the 100th launch of rockets. And that has placed India in a very special category of countries which has achieved these milestones. Starting from SLV-3 launches to PSLVs to PSLV XL to GSLV to GSLV Mark. And of course, the SSLVs. India has come a long way from 1979, the first launch from Sriharikota, to today, where we completed 100th launch. And there have been very memorable launches from Sriharikota, which also includes the Chandrayaan series of mission, the Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, the Mangalyaan, the Astrosats, and of course, the Aditya L1 mission. And PRL has played a big role in many of these science missions where we have flown experiments, which have performed very well or are still performing in orbits at L1 and in orbit around the moon through the Chandrayaan 2 orbiter. Today, that is 29th of January 2025 at 4 p.m., we have yet another very, very distinguished Vyakhyaan with us, who is Professor Shailendra Saraf, who is Director of NIPER. NIPER stands for National Institute of Pharmaceutical Education Research in Ahmedabad. And he is not only holding the position of Director of NIPER in Ahmedabad, but also Director of NIPER in Hyderabad. And it is a great occasion for all of us that on this century of Vyakhyaan, of PRL Kamrit Vyakhyaan, he is with us today, giving a Vyakhyaan on healthcare system in India, ancient to contemporaries, which is of course a very, very important topic for all of us because health is wealth and we know that very well. So we thank Professor Saraf for coming over here, in particular in person with us on this occasion and gladly accepting this invitation to be with us today. This is also an occasion where not only we celebrate the 100 Vyakhyaan series,
but probably this is one of its kind of Vyakhyaans where you'll be dwelling into these areas of how pharmaceuticals is helping the health of humanity. So with this, I would like to thank Professor Saraf on behalf of all of you and on behalf of all those who are watching us live to be with us in this auditorium, which is called as K.R. Ramnath Auditorium, who was the first director of PRL. And of course, the Karmbhumi of Dr. Sarabhai, who established this institute. I would now request my colleague, Professor D. Pallam Raju, the Dean PRL, to kindly introduce our today's Vyakhyaan to all the audience present over here in this hall, as well as those who have joined us live on the PRL's YouTube channel. So over to you, Dr. Pallam Raju. Thank you. Thank you, Professor Bhardwaj. A very good afternoon to one and all. It's indeed a pleasant duty of mine to introduce today's 100th Vyakhyaan Karta, Professor Shailendra Saraf. He's the director of NIPER, Ahmedabad. He did his education in Sagar, where he did his bachelor's, master's, and PhD from H.S. Gore Vishwavidyalaya. And after completing his PhD, he served as professor at BRN College Pharmacy in MP, Mandsaur, and as director of University of Institute of Pharmacy and Dean Faculty of Technology at Pandit Ravishankar Shukla University in Raipur. He was also the Vice Chancellor of the Hemchand Yadav University in Durg, Chhattisgarh, before moving here to Ahmedabad as the director of NIPER. During his professional career, he was associated with various national statutory, regulatory, and accreditational bodies like PCI, UGC, AICTE, DST, NBA, NAC, etc. He contributed significantly to the profession of pharmacy through different professional bodies like Association of Pharmaceutical Teachers of India, Indian Pharmaceutical Association, Indian Society of Pharmacognosy, and Indian Association of College of Pharmacy, Asian Association of College of Pharmacy, Indian Science Congress Association, and Indian Society for Technical Education in different capacities. He also served as the Vice President of the Pharmaceutical Sciences of India for around 5 years, 2016 to 21, and as a member of the International Commission of ACPE from 21 to 25. He has supervised 15 PhDs under his mentorship and has published more than 200 papers and also authored 7 book chapters and filed 10 patents. His exemplary work has been greatly recognized. He is a fellow of the International Institute of Organizational Psychological Medicine. He is a recipient of Dr. K.R. Parikh Award. He is a recipient of Platinum Jubilee Lecture Award in the 105th Indian Science Congress, which was held in Imphal in 2018. Late Srimati Kamlaben Vavia Memorial Award for the contribution to APTI. Pharma Ratna Academics and Administration Award, IPA Fellowship Award, Indian Pharmaceutical Societies Award, and HS Gore University Golden Jubilee Illustrious Alumni Award, to mention a few. Today, he will be delivering the 100th PRL Amrut Vyakhyaan on a very interesting, exciting topic, healthcare system in India, ancient to contemporary. With these few words of introduction, I invite Professor Shailendra Sarafji to please come onto the desk and deliver the Vyakhyaan. It's fine. Okay. Sharing the PPT. Yeah. So,
This is one. This is two. Okay. So good afternoon, respected Professor Bharadwaj, Dean Dr. Raju, the leadership of PRL, and scientists, and most important, I think, budding professionals from PRL laboratories. It's really my proud privilege and honor to be here. And as your director has mentioned, this is a memorable day for PRL and ISRO. But he forgot to mention one more thing. This is memorable day for me as well, because it was in my wish list to visit at least once this institution, which accomplished really next to, we can say, imagination. When you visit your own website and see the accolades, the 5 Padma Vibhushan, then the number of awardees in different categories, and Bhatnagar awardees, there's more than 16 Bhatnagar awardees. So coming here, it's really, again, honor, and I cannot tell you how happy I am today. But at the same time, there is a peer pressure of performance, because real performers are sitting before me. I belongs to a typical teaching fraternity where we talk very high and translate really a little. This is the scenario of the academics in India. As Dr. Mashelkar has long back said, is the capacity of academia to translate the academic research into the commercial value, which derives the respect of the nation. So now most of the academic institutions are working in those lines, and whatever little they have, they are trying to find out the commercial value of those outcomes which is generated in the laboratories. Again, I am working in one of the small field of pharmaceutical sciences, but as I was instructed by your director to be here, so I am here, and he said you have to talk on popular topic. So spontaneously I have shared a topic, but I forget I have given really a wrong topic, because Ayurveda alone is a matter of discussion for years together, centuries together. It is rightly mentioned, Soyam Ayurveda Saswatam Anaditvat. This is Ayurveda, which is considered as eternal without any beginning or end. मजाक में भी बोलते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा यमराज हरित प्राणाय वैद्य प्राण धनानीचा. तो इतना पुराना इसका एसोसिएशन है. And whenever we talk about the health care, so this started from the old age practices, when the human being is just surrounded by the natural resources and depending on those natural resources as well for the cure. At that time, few systems emerged, and the oldest one is Ayurveda. And it is clearly mentioned, औषधि एक गंगा नदी है, और जो वैद्य है वो विष्णु का रूप है, नारायण का रूप है. जब हमारी आयुर्वेदा की बात हम शुरू करते हैं, तो if you find some time to see at least first chapter of Charak Samhita. Charak Samhita is not written by one person. That is an edited book. But try to understand the scientific approach to come with a document which is really immortal. How they have initiated the scientific deliberation, how they invited the chair to chair the session, how they have to come with a concrete observation, they have to speak in the low volume, and then they have to record something. This is the Charak Samhita. And for our understanding, Charak Samhita is not written in one day, but it's always open, and it was amended time to time. Before that time, when it was documented, some other practices were also there. After that, localized these systems were in practice, which were talking about their own
things, but most of the time, those healthcare systems were also depending upon the natural resources. But the beauty of Ayurveda, I can give you one example of Jivak. Jivak, one of the renowned physician of Ayurveda, when he was studying in Nalanda, so after completion of his theoretical work, he was given an assignment by his teacher. And assignment was, you go to nearby forest and come out with a vegetable which is not having the medicinal value. सभी जगह होता है, कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, कुछ रुक के आते हैं, लेकिन जीवक को करीब 1 साल लगा और जब वो लौटे तो उन्होंने बोला कि शायद आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट द डिग्री फ्रॉम नालंदा इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. एंड हिज टीचर सेड, you are the only person who deserves the degree with flying colors. And it is said, amantram aksharam nasti, nasti muluna aushidam, ayogya purusho nasti, yojakastattra durlava. It meaning, कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते एक मंत्र बनाने में. कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसको हम मेडिसिनल वैल्यू के लिए, उसको औषधि के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो. और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है. ये हम आप पे, डायरेक्टर साहब पे डिपेंड करता है कि उस पुरुष को हम कैसे उपयोग करते हैं. ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो एक शब्द का उपयोग मंत्र में कर सके, वनस्पति का उपयोग औषधि में कर सके और एक अयोग्य पुरुष का भी उपयोग संस्था के लिए कर ले. That is the time and that's the training of Ayurveda. You have to see and you have to understand how much we are depending upon the natural resources and how beautifully we have to use those resources. People talk very high about the limitation of Ayurveda. They said this is not for the acute reactions. बुखार कम करने के लिए अचानक नहीं होता, लेकिन जो इसकी थ्योरी है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम चा, कि हमारी जो स्वास्थ्य है उसकी हम रक्षा करेंगे, लेकिन आने वाली परेशानी से भी आपको बचाएंगे. It means it has a potential, the curative as well as therapeutic. This is the beauty of this particular science. और ये जो साइंस है, मतलब आपको डिस्क्लोजर आपको बोल देते हैं कि आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा, एट द सेम टाइम आई एम नॉट a student, I am not conversated in Sanskrit also, so I am just violating my limit, so there is potential risk of mistakes, so I think it will be ignored. So ये कहा गया है कि एक holistic approach की बात करते हैं, but I think this word of holistic approach come from Ayurveda only. वो क्या बोलते हैं कि आप क्या हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, you are true representative of ब्रह्मांड. आपका फील्ड में कर रहा हूं, मेरे मतलब वायलेट कर रहा हूं अपनी लिमिट्स को, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी, दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रह्मांड. और उसमें वो ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, उसकी परिकल्पना के साथ में इस साइंस को डेवलप किया गया है और ये अपने आप में कंप्लीट है. एंड व्हाट दे सेड कि यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द बैलेंस ऑफ ऑल द थिंग्स एंड यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी. और उन्होंने उसको पंच महाभूत को, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांचों को लेकर उन्होंने बोला है दैट इज कंपोजिशन ऑफ द बॉडी. एंड इफ यू आर एबल टू मेंटेन दिस बैलेंस, यू कैन एंश्योर दैट यू आर हेल्दी एंड यू आर लीडिंग योर लाइफ हैप्पीली. त्रिदोष की एक कल्पना है, वात पित्त कफ की कल्पना है. आज जो मॉडर्न साइंस बोलती है कि आज हम कार्टी करके या दूसरे जो डिसीज को हम क्योर करने के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देंगे, दैट इज द साइंस व्हिच वाज गिविंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. कभी भी एक से रोग के लिए एक दवा नहीं दी जाती थी. फर्स्ट यू हैव टू गिव, वे सिट बिफोर द वैद्यराज और वो इंटरोगेशन करते थे, आपकी पूरी वात पित्त की जो पूरी आपकी प्रकृति समझते थे और हर दोष में आपके पास में उसको क्यूरेटिव और आपको उसको अगेंस्ट में काम करने का होता है. तो पहले आपकी पर्सनलाइज्ड प्रकृति समझी जाती है. आज भी यदि आप वैद्य के पास जाते हैं तो फर्स्ट दे ट्राई टू नो द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ योर बॉडी एंड बेस्ड ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस. तो ये एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक typical example है, which is not translated just because of the 200 or 300 years of invasion in this particular country. और ये कहते हैं कि आपको दवा को यूज कैसे करना, उपयोग में कैसे लाना है. तो उसने बोला है कि विष आपका जो यदि है और यदि आपका
वो है कोई अग्नि है, इनको कैसे उपयोग में लाना है आपको। विष, अग्नि और शस्त्र दी है, इनका यदि आप बहुत सोच समझ कर उपयोग नहीं करेंगे तो आपको जलने का, आपको चोट खाने का और आपको अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज करने का कारण रहेगा। यदि आप इन चीजों को बहुत सामर्थ्य से, कॉम्पिटेंस से इसको उपयोग करते हैं, देन यू कैन ट्रीट योर डिसीज, यू कैन नरिश योरसेल्फ विद इन द फॉर्म ऑफ फूड, और आप दुश्मनों से अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। तो दिस इज द साइंस। साथ में कुछ और भी साइंस डेवलप हुई जो ऐसा बताती है कि यहीं से निकल के गई, हमारी जो इस भूमि से निकल गई, उनके लोकल वर्जन बने। चाइनीज मेडिसिन, तिब्बतन मेडिसिन और कई भी मेडिसिन आई, उनने भी अपना काम शुरू किया, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन मोस्टली दोज साइंसेस आर आल्सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन दी आयुर्वेदा। एक अकेला जो हमारा एक अलग से शास्त्र आता है, जो सिद्धा का हमारा एक है, जो रसायन शास्त्र से, नागार्जुन से डराइव होता है, उसकी थोड़ी सी फिलॉसफी उनकी इनऑर्गेनिक मॉडल्स के बीच में है। आई कैन रेफर यू वन ऑफ द गुड बुक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, that is also one of the book which can be stored in your library, and it gives you the beautiful the history of the Indian system of medicines. जब हमारा मिडिल युग आया तो उस समय पे, जब पहले एक जो प्रैक्टिस होती थी कि अपना वैद्य राज का एक कॉन्सेप्ट होता था कि पहले वो प्रकृति देखते थे, इसके बाद में उस प्लांट के पास जाते थे, उस प्लांट की उसकी उम्र और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का उनको कलेक्ट करने के बाद में उस पेशेंट को दिया जाता था। लेकिन जब ये काम बढ़ा, जब पॉपुलेशन बढ़ गई, उनकी रीच की बात हुई, तो एक सेंट्रलाइज उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन काम करने का शुरू हुआ। और मिडिल ईस्ट से ये कॉन्सेप्ट शुरू आया, ग्रीक कल्चर से ये शुरू आया, ब्रिटेन से शुरू हुआ कि स्पेशलाइज लोग केवल ट्रीट करेंगे और उसको मेडिसिन उसको कोई दूसरा आदमी देगा। वो जब एज शुरू हुई तो उसके बाद में सारी चीजें शुरू हुई कि हम अपना एक डिपेंड करेंगे, फार्मासिस्ट पे डिपेंड करेंगे। अर्लियर वन पर्सन यूज्ड टू डू ऑल द एक्सरसाइज एट ए टाइम एंड एट वन प्लेस। इसके बाद हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। दिस इज आई कंसिडर एज ए डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी तारीख, एक ऐसा समय जहां दोनों तरफ अलग तरह के कल्चर होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये उदाहरण है 1970 का। तो 1970 में एक इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द टेक्स्ट बुक्स आल्सो, India was the topmost exporter of the medicinal herbs throughout the world. In 1970, before 1970, Ayurveda was not recognized as a therapy. It was not recognized as a science. And for your surprise, in the 1970 only, Cambridge and other dictionary added word Ayurveda in their dictionaries. We were very happy that we have achieved something. But this is the time when there was a clear-cut downfall of the Indian system of medicines and export and production of the herbal medicines. Why? They start regulating your drugs. WHO adopted in 1970 only a definition of health. In this health, they said a state of complete physical, mental, and social well-being is health. From where they have taken this definition? They have taken partially from what Ayurveda says, समदोषा समाग्निश्च समधातु बल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इतिमि देते। तो जब उनने, जो मॉडर्न साइंस ने देखा कि उनके पास में कोई ऐसा औजार नहीं है जिससे वो आत्मा, मन और आपकी प्रसन्नता नाप सके, तो उन्होंने सोशल वेलबींग से रिप्लेस कर दिया। तो दे हैव टेकन दिस डेफिनेशन फ्रॉम आयुर्वेदा ओनली, बट दे स्टार्ट regulating the herbal production of this country and Ayurveda, and it's gone to its all-time lowest level. वो समय था जब हम अपने साइंस को छोड़ के पूरे इस तरफ मुड़ गए। उनका पर्पस था कि they have developed a documented evidence-based system and they were propagating the system, or we were just following them. उनकी फिलॉसफी को फुलफिल करने के लिए हमारे इंडिया में एक एक्ट आया, वो था कि एक प्रोप्राइटी की मैजिक एक्ट करके लाए, और वो था कि जो आपकी जो फॉल्स आप क्लेम्स उस पर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द क्योर ऑफ द रूट कॉज, एंड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इज टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. They are treating the symptoms, but Ayurveda treating
the root cause. And this is totalized. So in total, this is totally we can say experience-based technology. उसमें ये होता था कि हम एक एक आदमी को प्रकृति के हिसाब से आते थे, तो कोई एक यूनिवर्सल मॉडल नहीं बना पाए, and we were unable to produce the numerical data. Still at that time, Government of India resisted like anything. So they said, okay, we are recognizing Ayurveda and we are recognizing Ayurvedic formulations also. But what play they have done again, what they said, if you are producing a medicine, if you're producing this medicine which is followed, which is prepared following the standard books text, it will be considered as a standard. This definition was given by the Indian experts. If somebody is preparing a formulation following the शास्त्रीय पद्धति को बना के हम करते हैं, तो शास्त्रीय हमारा standard माना जाएगा. They said, okay, we will follow. Again, few years later, they said, you have to again give the evidences कि how you have followed the शास्त्रीय पद्धति. So this thing is still going on, and government level, everyone is suffering. They are using, if you are in US, even we are in US, so the pharmacists are prescribing you कि आप वो ले लीजिए, एलोए वेरा ले लीजिए, लेकिन एलोए वेरा formulations, घृत कुमारी formulation is not allowed to export in the Western world. So this type of game going on, this is the time when we have to really think on such issues. And there is no other system which is adding fourth dimension of your healing. Fourth dimension of your healing, which is spiritual as well. Because now people are talking very high about the placebo effect, कि आपको बिना दवा दिए भी आपको मेंटली आपको इन्वॉल्व करते हैं, तो आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं. मॉडर्न फार्मेसी की जहां तक बात करेंगे, please bear with me. I already shared this PPT with your dean, so you can take this PPT, but I am not following the words and line as a word, so it gives better opportunity to connect with all of you. तो मॉडर्न फार्मेसी जब शुरू हुई तो उसमें ये रोल डिफाइन किया गया कि एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगा, एक फार्मासिस्ट होगा, और सबके रूल्स को उनको बांट दिए गए. इसके बाद में उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट होंगे जो केवल फार्मासिस्ट आर नॉट हैविंग द राइट टू प्रिस्क्राइब. डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब, नर्स कैन प्रोवाइड द केयर, एंड फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस द मेडिसिन. तो जब नई फार्मेसी जब आई, कुछ ऐसे वर्ल्ड में कुछ पैंडेमिक आए, कुछ एरर्स आई, जिन एरर्स के बेसिस पे इसको और डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, तो ये पूरा साइंस डेवलप करना शुरू हुआ. लेकिन यदि हम बात करें, आपको जो सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब शुरू हुआ, दिस इज आल्सो स्टार्टेड विद द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज. इवन द बेसिस ऑफ द होम्योपैथी एंड अदर सिस्टम्स, they also have the same background with the drugs which are already mentioned in the Ayurvedic text. एक बहुत सुंदर सा एक अलग ग्रंथ है, उद्दीश तंत्र के नाम से जाना जाता है. उसको लोग क्लेम करते हैं रावण कृत उद्दीश तंत्र है. उसमें भी बहुत सी दवाई और प्रक्रियाएं दी गई हैं, लेकिन वो सारी की सारी अगेन टेकन फ्रॉम दी आयुर्वेदा. एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम पुनर्नवा का देते हैं. अकेला पुनर्नवा का उद्दीश तंत्र में जो मेंशन है कि आप किस किस तरह से ले सकते हैं. ओम लोग वशीकरण कराए, कुरु कुरु स्वाहा करके बाह में बांध लो और उसका लिवर ठीक हो जाता है. अब मॉडर्न साइंस इज अनेबल टू substantiate with the help of the scientific data to claim that it is improved just because of the drug, but effect is there. ऐसे कई ऐसे जो ड्रग्स हैं जिनके बारे में फिर कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इस पे काम करना भी शुरू किया. उनने उसको एक्सट्रैक्ट लिया, और जो हम लोग साइंस की एक अप्रोच होती है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट द पिन पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी, और हमने एक कंपाउंड निकाल लिया. जैसे जैसे हमने उसको फ्रैक्शनेशन करके हम उसको पिन पॉइंट करते गए, एंड देयर वाज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द एक्टिविटी, एंड व्हेन इट वाज फाइनली आइसोलेटेड देयर वाज नो एक्टिविटी. एज ए पार्ट ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच, अगेन ऑल द कंपोनेंट्स वर मिक्स्ड and activity was lost. The Western scientists concluded this drug has activity, but overall the typical natural combination is responsible for the activities. This is the excuse they are giving. So this is the beauty. But now this science developed. अब थोड़ा सा उन्होंने कोशिश किया कि हम उसको फाइंड आउट करें, एंड मेजर मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द एक्टिविटी, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट समय आया, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड, दैट इज नोन एज अ post-antibiotic era. Again, there's a caution. We are heading towards pre-antibiotic era. Reason being, just because the over-regulation, nobody is discovering new antibiotics. At the same time,
more than 50% population is already under the antimicrobial resistance. तो इसके बाद में ये सब चीजें चलती गई और हम डिजिटल एज तक आ गए और आज हम बात करते हैं कि हम केवल देयर इज नो नीड टू गो टू वेट लेबोरेटरीज विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल डाटा यू कैन प्रोडक्ट न्यू मॉलिक्यूल न्यू थेरेपीज एंड न्यू अप्रोचेस फॉर द हेल्थ केयर। और जहां तक हम बात करते हैं आज एक जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो कहती है कि टीचर्स आर रिक्वायर्ड, साइंटिस्ट आर रिक्वायर्ड टू सिट इन द केबिन्स, देयर इज नो नीड टू गो टू द लेबोरेटरी. They have to focus more on ideation because in the contemporary world, the most important observation is ideation is missing. Same thing has happened in case of pandemic as well. Because when pandemic came, there was not even a single warning, prediction, or we can say any hint that it may come. We can consider about the Stephen Hawking once he mentioned that we are heading towards another thing where they were talking about the, machine learning and all that. And they said, if it is possible today, tomorrow, or day after tomorrow, but there will be real success in the field of artificial intelligence, and this will be end of human being. एक दूसरा हमें एक जो उस समय का जो एक प्रेडिक्शन मिलता था वो हमारे ख्याल से बिल गेट का मिलता है कि फ्यूचर पैंडेमिक, उसने जो एटॉमिक एनर्जी को ब्लास्ट होते उल्टा दिखाया था कि दिस विल बी द वायरस, दिस में हैम्पर दी this will affect the mankind. Lekin systematically, those even working in the laboratories had not predicted this type of pandemic. As we all know, COVID is a man-made laboratory leaked virus, but nobody has predicted this must be the quantum of this particular virus. So, अब इस समय में जो आने के बाद में हम जो एक इंटरनेट एरा में रह रहे हैं, हम IoT में रह रहे हैं और हम बहुत जल्दी क्वांटम युग में जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में जाएंगे, तो उसके लिए हमें तैयार करने के लिए we have to focus ourselves for the future pandemics, and we have to prepare accordingly. So जो रेगुलेशन वगैरह आने के बाद में this science was evidence-based, developed by the Western world. So in order to command the maximum financial gains, they have planned the activities and they are start regulating everything there only. So different things were developed, like this ethical issues came because there was unethical clinical trials were going on. And even those drug molecules were brought in the market hurriedly, has taken life of several people. So this is regulated under the we can say direction of the UNICEF. And UNICEF has one more suggestion has given in 2000. And they said while you are talking about the ethics, there is a need to have proper communication among the peers of the same profession. उनका कहना था कि एक यहाँ पे ऐसा हो कि जहाँ पे nurse, pharmacist, and those who are in the healthcare system, they should have a proper communication system. लेकिन आपको सुन के फिर से आश्चर्य होगा कि 5-6 साल पहले ये सुश्रुत ने लिख दिया था, एकम शास्त्र मदीयानो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुत ज्ञान वेदानी च चिकित्सा. यदि आप केवल एक विज्ञान जानते हो तो आप वैज्ञानिक नहीं हो. यदि आप अपनी विज्ञान को जानते हो और दूसरी चीजों को भी जानते हो, जब भी आप क्लेम कर सकते हैं कि आप एक अच्छे चिकित्सक, अच्छे साइंटिस्ट हैं. तो जो यूनिसेफ भी या जो भी काम कर रहे हैं, यदि हम उसको क्रिटिकली यदि हम उसको डाइसेक्ट करते हैं तो लगता है कि देयर रूट्स इज ऑलवेज फ्रॉम चरक संहिता और फ्रॉम सुश्रुत संहिता. सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. लेकिन अभी जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, और दूसरी बड़ी चीज ये है कि हमारे लिए बताया गया कि वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय द नैरेटिव्स फिक्स्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड. जस्ट पैंडेमिक के पहले एक बहुत मैकेंजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इंडिया इज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म. इंडिया इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन पैंडेमिक में हमें पता चला कि हमारा रियली हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड तो हैं, लेकिन अगेन वी हैव मोर देन 90% डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एज फार एज द बल्क ड्रग्स एंड की स्टार्टिंग मटेरियल इज कंसर्न्ड. हमें उस समय पता चला कि यस वी आर गुड फॉर द मेडिकल टूरिज्म, बट the facilities, medical facilities are not evenly distributed across the nation. So this we have came to know. Now government of India has started working with the beautiful schemes like PLI in bulk drugs and medical devices. But very importantly, हमें आपको ये बताएंगे, हमें क्लेम करते हैं कि now we are the pharmacy of the world. और हम क्यों कहते हैं ऐसा कि pharmacy of the world है? हम 200 से ज्यादा कंट्री को ड्रग एक्सपोर्ट करते हैं. We are the third in the world as far as the production of the volume wise concerned.
लेकिन as far as the value is concerned, we are 14th. So government has rightly dissected this particular aspect, why we are very low in the value chain. And the reason is innovation is missing. We are supplying, we claim that we are supplying the more than 70% of WHO vaccine. UNICEF को भी हम दे रहे हैं. पूरा जो 50%, more than 50% of the US generic formulations are given, supplied from India. हम पूरे जो formulations है, यदि आप UK की बात करें तो इंडिया से जाता है. And they are the markets which are very systematic and strictly regulated. It means we are producing formulation which are of the standard. Lekin those drug molecules, those technologies are developed at their land, so they are commanding the advantage of the IPR. So they are producing very less, but they are very high in the value chain. As far as the US FDA की हम बात करते हैं, the United States Food and Drug Administration, which is considered to be the topmost agency, which gives the approval of the approval for the compounds and formulations to be supplied to the larger populations, and world की सारी जो regulatory authorities उसको extended gold standard मानता है. Like this was the time during the pandemic, the government of India has developed this confidence that we have developed our own engineered, indigenously developed vaccines, and we brought in the market with the help of hand-holding of this regulatory framework as well. हमारे पास में more than 60,000 formulations हम बनाते हैं. We have more than 10,500 manufacturing agencies. Out of this, more than 3,000 are approved by the government of the US FDA. So we can understand, but what is next? So the target before the government of India is to translate, to transform from pharmacy of the world to pharmaceutical laboratory of the world, because we have to learn to translate our basic sciences into financial gains. Sorry. Same thing has happened. We came to know during the pandemic, there is more than 90% dependence of the medical devices. So during pandemic, it is initiated, and as I am happy to share here that the government of India has given this responsibility to NIPER to establish a center of excellence in the for the R&D of medical devices with the support of 110 crores. So government of India is doing all around efforts to grow those two fields. This is the industry, which is a rising start industry. And if we really want the higher place in the world economy based on GDP, so we cannot ignore the presence of the pharmaceutical industry. And these are the new paradigm shift after this pandemic, because we were just looking towards the treatment of the drugs. ये केवल पैंडेमिक में हमने सीखा कि हम अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर्स लाएं, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लोकल मेडिसिन. और हमारा जो सिस्टम रहा है कि हम लोगों की जो एक महान संस्कृति रही, इस महान संस्कृति ने हमारी जितनी भी स्पेशलाइज्ड साइंसेज हैं इसको कॉमन लैंग्वेजेस में लोगों के बीच में पहुंचा दिया. आई बिलोंग्स टू बुंदेलखंड. वहां पे भाट और मगरी माग जैसे कवि हुए हैं, वो बताते हैं कि कुंवर करेला कातक दही बर हो न तो पर हो सही. So this is the specialized information translated into a language which is digestible to common man of the country. हमें सभी को मालूम है कि हमें घर में बता दिया गया कि यदि हमें घर में यदि हम उसको गोबर से उसका पोंछा नहीं लगाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे. ये हमें बहुत बाद में पता चला कि शायद इसमें रेडियो एक्टिविटी को प्रिवेंट करने का भी प्रॉपर्टी होती है. हमें लिए बहुत बाद में बताया गया कि हम घर में जो तुलसी डालते हैं खाने में, कि उसको बताया जाता है कि भगवान भी शायद खाना नहीं खाएंगे, तुलसी नहीं है. ये हमें आज पता चलता है कि इट लिबरेट्स द फाइनेस्ट पॉसिबल लेयर ऑफ ओजोन व्हिच प्रिवेंट्स द फूड मटेरियल फ्रॉम डिके. तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर, और हमारी संस्कृति जो थी, महान संस्कृति थी, ये इन्वेडर्स की संस्कृति नहीं थी, ये ग्रीस से आने वाले लड़ाकों की संस्कृति नहीं थी, ये ब्रिटेन से आने वाले हमारे जो ट्रेडर्स की संस्कृति नहीं थी, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की संस्कृति थी. हमारे वेदों को भी हमने आईपीआर नहीं किया. आज किसी से पूछा था कि वेद कहां से आए, तो बोले वेद को किसी ने लिखा, वेद के दृष्टा थे. दृष्टा कैसे थे कि वेदों की मुख से निकलने वाली वाणी को वो देख सकते थे. दे हैड दिस कैपेसिटी टू सी द साउंड. और उनने इन ऑर्डर टू मेक इट
पब्लिकली एक्सेसिबल, उन्होंने बोल दिया कि हमारी ओनरशिप नहीं है, ये तो देववाणी है और हम लोग डॉक्यूमेंट करके रख दिया। दिस इज संस्कृति, बट दिस टाइम हैज चेंज्ड। वी हैव टू बी with the expansion and development of the information technology, we are living in a small village, so we have to follow the code of conduct of the village. And for the national interest, we have to focus on IPR, we have to develop these type things, and we have to translate those IPRs into commercial value, because it's directly linked with the national we can say respect. So this is my conclusion. एक बहुत दो स्कूल ऑफ थॉट्स पूरे दुनिया में चलते रहे। वो स्कूल ऑफ थॉट्स दो ऐसे हैं, एक स्कूल बोलती है कि हम केवल एविडेंस की बात करते हैं, और एक कहती है हम एक्सपीरियंस बेस्ड बात करते हैं। तो इसके लिए ये इट्स हाई टाइम। एक साउथ अफ्रीका में कहानी की until the lion writes his own story, history of hunt will always glorify the hunter. So this is time to write our own narratives. This is time to burn the spirit of pride, and we have reason to proud of. We have great cultural heritage. If we are connected with our own, because जब अपनी बात करते हैं, हम जब कन्वेंशनल टीचिंग शुरू नहीं हुई थी हमारे भारत में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा में, जहाँ पे 3,20,000 आश्रम चलते थे, उसमें पहले और दूसरे नंबर पर मैथ्स के बाद में एस्ट्रोनॉमी हुआ करता था। दिस इज द रिचनेस ऑफ दिस कल्चर। तो हमारे लिए जो आउट ऑफ फैशन हमें जो हम इसको अपनी संस्कृति से दूर हटने का एक फैशन दिखाते रहे, ये वो समय है कि हम इस फैशन से निकल के अपनी रूट्स की तरफ दोबारा जाएं। हम पुनः कोशिश करें, हम अपने भव्य अतीत को पुनः जागृत करें, और जो भी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये कंपल्शन है कि आप मॉडर्न टूल्स टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, साथ ही अपने भव्य अतीत को भी साथ में लेके चलें। तो आप अपने जीवन काल में न केवल स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, बल्कि देश के लिए भी और पूरे मानवता के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। और इस सुंदर से ग्रह को, आप लोग तो ऊपर से भी देख लेते हैं, सुंदर से ग्रह को और सुंदर बनाकर जाने का हम प्रयास कर पाएंगे। सो यहाँ हम वक्तव्य अपना खत्म करते हैं, लेकिन मैं हमें एक शिक्षक के नाते पसंद करता हूँ कि यदि कोई इंटरेक्शन हो तो मेरे लिए कुछ सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा। आपने हमें रियल हेल्थ केयर प्रोफेशन की जो जर्नी थी अतीत से लेके आज तक, उसको जोड़ दिया, और आपका संस्कृत रियली बहुत बेहतर था। एंड आई वुड लाइक टू ओपन दिस फोरम फॉर द क्वेश्चनरीज। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आपने लास्ट में एक चीज बोली थी कि हम लोग जो तुलसी यूज करते हैं उससे कुछ ओजोन लेयर फॉर्मेशन होता है। जी, थोड़ा सा उसको डिटेल में बता सकते हैं कि सॉलिड पे अगर रख रहे हैं या लिक्विड में यूज करते हैं तो किस तरीके से वो उसको ऐसा अपनी प्रथा में ऐसा है कि खाने के तैयार होने के बाद हमें फ्रेशली तोड़ के ही उसमें रखना है। तो ऐसा बताते हैं कि अभी जो साइंटिफिक मतलब जो रिसर्च चल रही है कि उसमें से एक ओजोन की लेयर जितनी उसकी आवश्यक होती निकलती है, वो उसको कवर करती है। अब अगेन एविडेंस बेस्ड उनके बराबर अपन को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस पर एक सिस्टमेटिक काम हम नहीं करते। ये प्रयास रहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे क्या बोलेगा, बट दिस आर द एरिया वेयर वी हैव टू वर्क अपॉन, वी हैव टू ट्रांसलेट दोज कॉन्सेप्ट्स। कि हम जो जितने भी अपने देखे जहाँ जहाँ पे आपके हाई प्रोन जोन है, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होती है, वहाँ गोबर का एबनॉर्मल यूज करते हैं। और हमने डोमेस्टिकेशन गाय को क्यों किया? अकेली गाय का यदि अपने जो उसमें गट बैक्टीरिया को भी हम बात करते हैं, तो अभी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी काम कर रही है वो एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। उनका कहना है कि जो अपना आर्टिफिशियल हम माइक्रोबायोम बनाएंगे, और उस माइक्रोबायोम में यू विल सरप्राइज लगभग 50% स्टरलाइज्ड माइक्रोबायोम टेकन फ्रॉम दी काउ गट। तो इन सब चीजों को बहुत एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक जामा पहचानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास में आई है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। छोटी छोटी जैसे पीस मिल स्टडीज होती हैं, आई हैव नॉट ozone is revelated, but this is reported, but they have no guts to because it is not widely accepted by the scientists, because we have to go to publish those observation in the Western world, and there is always language bias. आप इस तरह कोई भी एक्टिविटी लेके जाते हैं, they will first ignore you, they will laugh at you, but there is need
तो हम उसको उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ में यदि हम आगे बढ़ के जाएंगे तो इसको ट्रांसलेट होगा. दिस इज नॉट माई वर्क, आई एम जस्ट कोटिंग इट हियर. सर की बात को मैं ऐड करती हूँ, जो सर ने बात की माइक्रोबायोटा की. सो नाउ रिसेंटली वी हैड कम अप विद द इन प्रिवेंशन ऑफ द डायबिटीज. देयर इज अ गट माइक्रोबायोटा which is responsible for some hormones release, right, and which gives a insulin dependent diabetes or non-insulin diabetes. So now people are finding a way with this microbiota to cure the patient, to prevent the diabetes. So just now I also learned the same thing, that the microbiota will be the next medicine for the diabetes. That concept is always launched by Stanford University. There is a microbiome therapy. What they are saying, there is no need to give any medicine. We have to ignite, we have to produce the this microbes in your gut, and they will produce on your own. And that was happening in the past. एक आपको राख खिला के आशीर्वाद दे के वो उसको ठीक हो जाता था. तो कुछ तो कुछ बनता होगा, आप ट्रांसलेट करना है. आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ राख खा के ठीक हो जाती है. और एक बहुत सीरियस आपको एग्जांपल दें. आई वाज देयर इन वन ऑफ द डेलीगेशन ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर एथनोफार्मिकल एक्टिविटी ऑफ रिमोट ट्राइबल विलेज. मैं वहां कैसे पहुंचा था आपको बताता हूं. हम ट्रेन से जाने के बाद में 150 किलोमीटर हम बाई रोड गए, जीप से, बड़ी कार नहीं जीप से गए. उसके बाद में हमारी नाव पे ले जाया गया क्योंकि उस दूसरा पुल नहीं था. इसके बाद में जाके हमारे लिए एक बैलगाड़ी से जाके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचे. शाम हो गई थी तो हमें सोने के लिए हम लोगों को जमीन पे जो चादर दी गई उस पर एक मॉस्किटो नेट लगाया गया. तो हम लोगों ने पूछा कि मच्छर ज्यादा है. बोले नहीं, ये सांपों से बचने के लिए है. So we are laughing at their condition, but you believe they are existing there for centuries together. और वहां पे कभी उनका मलेरिया का भी पेंडेमिक नहीं आया. How they are surviving? There's need to respect their wisdom, collect the information, translate and scale up. पहली चीज लेकिन क्या है? First we have to respect their wisdom. They are not less wise than us. They are more wiser than us. They are living with the system and they are surviving centuries together. They have उनमें से 90% लोगों ने कार नहीं देखी है. कार नहीं देखी है. हम ये बस्तर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं. और इट्स नॉट फॉर अवे, जस्ट 300 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑफ द छत्तीसगढ़. अब वहां पर ऐसे पिछले 15 सालों में इतनी अप्रोच हो गई कि वहां पर हर फैसिलिटी उनके डोर स्टेप पे पहुंच गई. लेकिन शताब्दियों से उस बीच में वो रहे हैं. इसको अपन को उनकी विजडम को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो हमारे सॉल्यूशन हाइपोथेसिस मिलना शुरू हो जाएंगी. Dr. Sharaf, I am Dr. Dani. I have one simple question. Across the world in developed country, they usually discourage the formulation containing the multi-drug, 2 or more drugs. But in India, I mean, we usually promote a multi-drug combination, multi-drug pharmacy. What's your comment? So this is a policy decision. At 1970 हम आपको मॉडर्न फार्मेसी का जो हिस्ट्री पे जो लाइन बताएंगे तो उससे लिंक करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि 1950 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948. 1950 में हमने पहला इंडिजिनस फार्मूलेशन बनाया, दैट वाज सिरप. उस सिरप में शुगर को छोड़ के सब कुछ इंपोर्टेड था. ड्रग्स वेर नॉट अवेलेबल, नॉट अफोर्डेबल. 70 में हमने पहली टैबलेट बनाई. 70 में जब 100% इंग्रेडिएंट हमारे इंडिजिनस थे. 1970 में सबको मालूम है कि हमने वर्ल्ड आईपीआर रिजीम को अपोज किया एंड वी क्रिटिसाइज एट दैट टाइम द लीडर्स. लेकिन दैट वाज द डिसीजन कि वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस पेटेंटिंग in order to make the things available and affordable to the masses of this country. In this line, certain procedures were adopted to make the things affordable. Now government of India is seriously thinking and few multi-drug formulations are withdrawn and they are still working on that. And we are supplying 200 plus companies. So sometime we have to follow the Western world, but we have to understand why we have reached to this destination. Because drugs are available now. है ना? गुड इवनिंग सर. रिक्रिएशनल ड्रग्स को समाज में बड़ा नकारात्मक रूप से देखा जाता है. मेरे 3 सवाल हैं.
कि कोई आदमी अगर दवाई लेके खुश रहना चाहता है तो समाज की दखलंदाजी कहाँ तक जायज है, और आप बता सके कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है और नाइपर में इसके बारे में क्या पढ़ाया जाता है? मतलब इसमें यदि अपन को एक नटशेल में बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड. दिस इज नॉट यूएस कि जहाँ पे एक में आप जाएंगे तो बीड इज अमेरिका के एक स्टेट में बीड इज ऑफिशियल एंड अदर इट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन जहाँ तक ह्यूमन बीइंग की बात है, आपको यदि अटेनमेंट करना है, इफ यू वांट द अल्टीमेट हैप्पीनेस, तो इट शुड नॉट बी external, it should be internal. And all such things which are giving you pleasure, happiness, time being is habit forming, and somehow they are playing with your basic configuration of the body. But time being, doctor also prescribe, यहाँ पे psychotic drugs हैं, अपना antidepressant drugs हैं, they are prescribing just for the medical purposes, not as a lifetime support. But I'm unable to understand your genesis. We'll discuss separately because we should not give the clue to the young generations. Okay. पहले जब साइकोटिक ड्रग्स नहीं आए थे तो अफीम और गांजा समाज में बहुत प्रेवलेंस में था, और शायद उसी कारण से शंकर जी की भी गुणगान बहुत ज्यादा होता था क्योंकि उनके प्रसाद में मिल जाता था. लेकिन नाउ दिस साइंस इज टोटली डेवलप्ड, क्योंकि एक जमाने हर समय में काफी लोग साइकोटिक प्रॉब्लम से सफर करते हैं, और 90 के पहले तक साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम को और पागलपन को बराबर माना जाता था. ये समाज जागरूक हुआ है, उस समाज ने समझा है कि हम पागल नहीं हैं, हमें मनोवैज्ञानिक परेशानी है. उन मनोवैज्ञानिक परेशानियों को दूर करने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं बनाना है. कभी किसी का बच्चा का यदि पैर टूटता है ना, तो उसके पेरेंट्स पहली कोशिश ये नहीं करते कि बैसाखी दे दें, पहली कोशिश ये करते कि उसको ऑपरेशन करके उसका पैर ठीक कर दिया जाए. तो ये जितने भी चीजें जो डिपेंडिंग ड्रग्स हैं, ये आपके केवल स्ट्रेचर ही है, हमें कभी बैसाखी नहीं देना. यदि आप भी उपयोग करते हो तो प्लीज विल डिस्कस सेपरेटली एंड विल कम आउट ऑफ इट. एनीथिंग एल्स? हेलो. After a long time, I'm attending a Viva, really long time. That too, it's not topic of my specialization. सर आपने बोला ना आप टीचर है तो इंटरेक्शन ज्यादा. Yeah, I'm enjoying, I'm really enjoying. Thank you very much. It's very informative talk. My question is actually on this slide itself, experience versus evidence. So instead of putting their verses, why don't we try to merge both the things? Because like you talked about like starting with Ayurveda, and then from 1970s you started with basically allopathy and like, you know, then can you just comment or like, you know, give more light on the progress we have from Ayurveda point of view also? Because there is obviously, this is also like, you know, nowadays people are trying to use Ayurveda more than like, you know, what we used to do before. Exactly. So if you can please. So this is the concept of targeted drug delivery. So my drug is delivered right space. What is happening? आयुर्वेदा के बारे में एविडेंसेस नहीं है. उसके लिए एविडेंस देने के लिए देयर इज नीड टू हैव ए न्यूमेरिकल डाटा. तो ये हम आप सबसे अपील करते हैं कि हम अपने लेवल पर काम शुरू करें. हम एक आपको एग्जांपल देते हैं. भस्म बनाई जाती है. हैवी मेटल्स आर ऑलवेज, सॉफ्ट ऑर्गन्स आर प्रोन एंड एवरी. आप देखेंगे कि एक निकल खाएंगे और आपकी किडनी का एक पोर्शन चला गया. लेकिन निकल की या मरकरी की आप यदि भस्म खाते हैं शोधन करके, तो वो आपको लिवर को अफेक्ट नहीं करती. दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द पार्टिकल साइज. पुराने वैद्य जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते थे, वो उसको कहते थे कि हमारे हाथ में रब करने से यदि पोर्स के अंदर चली गई तो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गई. Here, scientific intervention is required. What, according to this practitioner, is of standard size, and you have to go to particle size analyzer, and you have to give the data. This is the way. This is the size which is acceptable, and this will not be harmful. So these type of activities or scientific approaches are required to generate the numerical data. For example, आपने सभी ने च्यवनप्राश का नाम सुना है.
मैं भी प्योर साइंस का आदमी था, जब मैं देखा कि च्यवनप्राश का देखा तो कैसे बनता है, तो आई वेंट टू आयुर्वेद कॉलेज. A very senior person, Dr. Tiwari was there, and in 1 year he demonstrated one full batch of च्यवनप्राश. उसमें एक डोला यंत्र होता है, 45 जो ड्रग्स वो उनको बॉयल किया जाता है, उसके ऊपर एक लकड़ी के ऊपर एक कपड़े में आंवले को बांधा जाता है, और उसको ये कोशिश करती है, डोला यंत्र है, डोला मतलब डोलता रहेगा, ये उसको टच नहीं करेगा. When we try to translate, I don't know how much I am right. एलो जो आपका च्यवनप्राश है, ये विटामिन सी का रिच सोर्स है. एस्कॉर्बिक एसिड इज ए थर्मोलेबाइल कंपाउंड, इट कैन नॉट रेजिस्ट द हीट, लेकिन उसको आंवले को पकाना भी जरूरी है. तो आंवले को उसकी भाप में पकाने, उसकी वेपर से पका रहे हैं, और somehow they are ensuring the ascorbic acid is remain intact in that formulation. मैंने डिफरेंट लेवल पे उसकी फिंगरप्रिंटिंग की, हर लेवल पे सैंपल लिया, उस सैंपल लेके हमने उसका एक फिंगरप्रिंट बनाया कि आपने डोला एन से जो निकाला है उसका यदि ये फिंगरप्रिंट आता है तो दिस इज स्टैंडर्ड. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि हाउ मेनी कंपाउंड्स आर देयर, बट दिस फिंगरप्रिंट इज देयर एट बॉइलिंग लेवल. प्रक्षेपण जो उसमें सुगंध मिलाते हैं उस समय का ये है, फाइनल का ये फिंगरप्रिंट है. यू जस्ट मैच दिस फिंगरप्रिंट, जैसा ब्लड प्रेशर अपना ब्लड अपन को क्लॉट को अपन को मैच करते हैं ब्लड ग्रुप को, वैसे मैच करके निकाल लो तो हो सकता है. तो इस तरह की अप्रोचेज में यदि हम शुरू करेंगे तो ये जो वर्सेस का है, स्कूल ऑफ थॉट्स दो है. वो कहते हैं कि हमारी एविडेंस बेस्ड साइंस जो है ना बहुत अच्छी है. आयुर्वेदा कहता है कि हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस अच्छी है. हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं. जब मैं काम करता था, एक ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस एक प्लांट, उसको बोलते हैं भृंगराज. एक दूसरा प्लांट है भृंगराज, एक्लेप्टाल्वा होता है. दोनों की फैमिली अब अलग है. उनने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल दिया दिस इज श्वेत भृंगराज, दिस इज a पीत भृंगराज, बट इन आयुर्वेदिक टेस्ट देयर इज मेंशन ऑफ वन भृंगराज. So this is somebody's responsibility to finalize which is the correct Bhringaraj as per the text of the Ayurveda. So this type of work is required, lot of work is required in order to rejuvenate. Research for resurgence is required. So this is my appeal, while we are relying on Ayurveda, we have to generate some evidence, numerical data in the form of evidence. So I'm just echoing your thought. This is not verses, but there are two school of thoughts are existing which are opposing one and each other. Okay. Please. So thank you, sir. It was really interesting talk. And also, I am also from Bundelkhand region. So when you said that Kwar Kartik Karela thing, it reminded me of my grandmother. Yeah. I've like heard after her, like I've heard it from you. So this is just a comment, but I have a question. So you want to like, here our ultimate aim is to like propagate Ayurveda. So I want to ask, what is the role of these international organizations, especially WHO? Is their role like positive, or they are putting like some limitation tariffs? So what is the current scenario? So Their take on Ayurveda. So आपने ये बोला ना कि क्वार करेला का तक दही मर होने पर है वो सही. एक और कहावत वहां पे है, पैर गरम पेट नरम से ठंडा बैद आए तुम्हारो डंडा. Yes. ये भी सुना होगा ना. Yes, my grandfather used to say that. हाँ. Your तो ये जो feet चीज should है be ना, warm always. तो हमारी स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंटेड नॉलेज को हमने जनरलाइज करने के लिए जो उसकी ग्लोरी को लॉस्ट किया है, वी हैव टू अगेन रीगेन दैट ग्लोरी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, बिकॉज दिस ओवरनाइट इट नॉट केम इन दिस एग्जिस्टिंग. वो उनके एक्सपीरियंस बेस से आया है ना. और जहां तक WHO का सवाल है, मैंने अभी मेंशन किया 1970 में दे हैव रियलाइज दिस इज अ फुल साइंस. एंड जो अनऑथराइज्ड डाटा है, 90% of the world population is relying on herbal drugs. My children is staying in US. कफ के लिए ने हमें बोला कि ये पापा ये ले लो. That was घृत कुमारी, एलोए वेरा. आप हम यहाँ देंगे, आप अपने लॉजेंस लेके आ जाएंगे, लेकिन घृत कुमारी को नहीं खाएंगे. तो वो आप अपने आप को आत्म गौरव का सम्मान लाने की जिस दिन कोशिश करेंगे, WHO का सब आ जाएंगे. पूरे वर्ल्ड ने जो इस समय अपन को रिकॉग्नाइज किया है पैंडेमिक में, इतने बड़े
कंट्री को, जहां मैं यूनेस्को की चेयर उसके साथ में जो बैठ के बात करता था, दे वर लाफिंग एट ही, क्या आप बना लोगे इतनी वैक्सीन को, इतनी सिरिंजेस कहां से लाओगे? हमने 200 करोड़ अपने खुद के लिए यूज किए हैं और 40 कंट्रीज को हमने ला के दिया। देयर वाज नॉट इवन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम एज वेल। तो हमें कहना है नैरेटिव्स हम लिखना खुद शुरू करें, है ना। और ये बहुत साउथ अफ्रीका की एक और कहावत है कि जब सुबह होती है तो सबसे पहले जो शेर होता है वो सबसे तेज भागने वाले शेर से आगे भागना चाहता है, क्योंकि अदरवाइज वो भूखा रह जाएगा। और जब हिरण जागता है तो सबसे स्लो हिरण से तेज भागना चाहता है, अदरवाइज की जान पे आ जाएगा। मैसेज ये है कि आप जब सुबह हो तो दौड़ो, शेर हो या हिरण। हमने दौड़ना बंद कर दिया, हमने दूसरों के नैरेटिव फिक्स कर लिए, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। Run like a lion, and this generation is really full of information and they have task. जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मैंने अपने टॉपिक पे लिखा था स्टडीज ऑफ हर्बल प्लांट्स यूजफुल इन लिवर इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, आयुर्वेदिक ड्रग्स। हमारी थीसिस का टॉपिक अप्रूव होने 6 महीने लगे। कोई ये मना नहीं करता था कि तुम आयुर्वेद को, कहता नहीं था कि आयुर्वेद वर्ड को हटा दो, वो कोई अप्रूव नहीं करता था। Then I replaced with indigenous drugs and it was approved. अब लेकिन आयुर्वेदा अनटचेबल नहीं है, अनटचेबल नहीं है, ठीक है ना। Thank you so much, sir. So I think no question. And sir, Yeah, first of all, thank you for this wonderful talk. When you are talking about this, reclaiming things, there's a lot of more legal issues also, as we see, in terms of, now I see that, the turmeric is being patented by someone else, or basmati rice is being, outside. So it is, my point of view is, my question is, what is being done in that respect to get these, patents back or have it an indigenous patents? And number two, with this Ayush Mantralaya, is there any new impetus, coming to what you are trying to say? So now this IPR regime is user friendly. They are supporting a lot, but still there's a lot of problem as far as awareness concerned. We are not working on geotagging. Even if somebody is taking your patent, need not to worry. We have several hypotheses. कम से कम 20,000 ड्रग्स तो हमारे आयुर्वेदा में डेवलप्ड है, लेकिन हम जो भी काम करें उसको पेटेंट के लिए जाएं, ये जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरा सपोर्ट भी आ रहा है। और अभी एक और लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक में प्रॉब्लम एक और स्कीम लॉन्च हो रही है, उसको बोलते हैं मैट्रेक मित्रा। You go with your TRL level, technology readiness level 3, and you share the problem, and they will validate, and on your behalf they will carry out. You will try to go to the legal end. So a PRIP scheme is published, sanctioned by Government of India, 5,000 crore rupees, and for the first time there is no restriction as far as government and private sector is concerned. So there are a lot of initiative. PLI has come. PLI, what is PLI? Performance Production Linked Incentive for medical devices and for bulk drugs. आप अपना यदि 10 किलो का आपका प्लांट है, आप 10 किलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, यू आर लिबर्टी टू सेल एट योर कास्ट। आप उससे ज्यादा यदि बेचोगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रियलाइजिंग वेल्थ क्रिएशन इज गुड फॉर द नेशन एंड समहाउ दे आर कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल बिल्डिंग। तो इस काफी चेंजेस आ रहे हैं, और our generation is really lucky that we are observing such type of generational changes in a very small of time. thank you very much, sir. Thank you for your presentation. Sir. When everybody is asking question, I should also. But first of all, I will compliment you for this very wonderful talk, which has brought us some thought process of how Ayurveda has been a glory for the country, or you can say for humanity, and how things have changed in recent times, but still we are trying to come back to that. In addition to Ayurveda and modern science, there are few other medical, themes. Like one of them is homeopathy. Homeopathy. Homeopathy, yes. Homeopathy. And
people also talk about Unani and other. Siddha. So is there I'm just looking at the common ground. Is there kind of some basis on which these are working? For example, Ayurveda itself has something which you go to the molecular level, you will see what molecules are actually being used. Same thing is true for this modern allopathy. They work on molecules. How does this allopathy and homeopathy and Unani is, if you have some knowledge where you can just give us some. Basically, Siddha, Unani, and all this IBC, Nasid, Gulf, they all are plant-based basically. Only thing, again, people say homeopathy is 100% scientific, but Western world is unable to recognize it scientifically. What theory they have proposed nowadays, the solvent has a memory of what type memory they are claiming, because more you dilute, more it becomes potent. So these type of things, which is, we cannot see Ayurveda with the specs of allopathy and vice versa, and for other specs also. So when we have to see a therapy, a system of this medicine, we have to first adopt the specs of that science. We have to learn, then we have to comment, but that is not happening. And inter-therapy system, there is no connect. But all are basically, for my knowledge, having scientific basis. All they have scientific basis. Still, there is evidence issue with some of them everywhere, where they are not able to generate the data to support it, right? That's all. Because now we are talking about the gene triggering. Right. For gene triggering, smallest possible molecule is required. So why we cannot consider homeopathy is doing the same thing? But modern science wants A plus B is equal to C. 2 plus 2 is equal to 4. This type of evidences they want. But we have to develop a system where we respect the observations or experience also. ये पूरे टाइम टेस्टेड इन टाइम बहुत लंबे समय से आए हैं. और हमारे गुरुजी बोलते थे कि यथा खरस चंदन वारवाई भारत से बीता नतु चंदन से एवं ही शास्त्राणी बहुनि नित्य अर्थानी मूढ़ा अर्थानी मूढ़ा घरवत बहंती. जिस तरह से एक चंदन को ढोने वाला गधा चंदन का भार जानता है, उसकी खुशबू से अनभिज्ञ रहता है, इसी तरह से बहुत से शास्त्रों को जानने वाला लेकिन उसके अर्थ के प्रति विमूढ़ उसी गधे के समय है. तो अभी जो हमें जो फार्मेसी की जनरेशन है, वो हम लोग बहुत एफिशिएंटली फार्माकोपिया पढ़ रहे हैं, उस बार को ढो रहे हैं, खुशबू को नहीं पहचान रहे. और जब ये रियलाइजेशन होगा तभी ये चैलेंज होगा, हम लोग नेक्स्ट फेज पे जाना कोशिश करेंगे. सो एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू बी a person who can enjoy the odor and fragrance also. It was excellent, and thank you. And now I hand over to Dr. Shah. So, just a minute. So thank you, Dr. Sital, for very nicely handling the question answer session, and thank you, sir, for interacting with our audience. And now I request our director, Professor Anil Bhardwaj, to kindly felicitate today's speaker and present a token of appreciation. Thank you, sir. So before we end today's program, I request my colleague, Dr. Vineet Goswami, to present vote of thanks. Thank you, Professor Sahu. So I have the pleasure to deliver the vote of thanks for this session. So it was a really interesting session. Thank you very much, sir, for giving the today's PRL Amrut Vyakhyaan, and more so because it is our 100th episode. We have finished 100 steps now. And so I would like to, from the bottom of my heart, thank Professor Dr. Shailendra Saraf, Director NIPER, for giving an excellent talk today about the healthcare system in India and its evolution. And next, I would like to thank the Director PRL and Dean PRL and their respective offices for all their support and encouragement in organizing the PRL Amrut Vyakhyaan. Next, I would like to thank all the members of the PRL Vyakhyaan Amrut Committee, PRL Amrut Vyakhyaan Committee
for organizing this event so nicely. Thanks to Dr. Sheetal Patel for conducting the question and answer session. And last but not the least, I would like to thank all the audiences present here and interacting for their active participation in today's event. I would like to say that please, we will have more events in the PRL ka Amrit Vyakhyaan series. So do check our social media platform to know about our future events. And with this, I would like to propose the closure of today's session, and I would like to invite you all for a cup of tea outside. Thank you very much.